Hello. Hi Ranbir. Hi. Hi Katrina. Wasim here from India News. Hello. Hi Ranbir. Hi. Hi Katrina. Katrina. Sorry. Deepika. Sorry. Deepika. I'm really sorry. मैं it was unintentionally. I'm really sorry for that. That's okay, no problem. रणबीर आपसे सवाल है और पहला दूसरा सवाल आपसे है दीपिका। अब तो सही बोला मैंने। पहली बार जब आपकी केमिस्ट्री सिल्वर स्क्रीन पे आई थी तो फैमिली में क्या रिएक्शन था? कभी फैमिली में या पापा ने या डैडी ने या रिलेटिव ने कहा कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है? मैं दीपिका से जब पहली बार मिला था वो रिलीज़ के पहले ओम शांति ओम और सावरिया अभी तक रिलीज़ नहीं हुई थी। हम लोग फिल्मिस्तान में शूट कर रहे थे एंड एक साइड सावरिया का सेट था और पीछे आई थिंक उन लोग ओम शांति ओम का एक गाना शूट कर रहे थे। तो जैसे ये फिल्म में ड्रीमी गर्ल है वैसे ही मैं बाहर एक्चुअली स्टूडियो के बाहर आया और ये अपने कॉस्ट्यूम में ऐसे गुजर रही थी। तो उसी वक्त आई थिंक एक फर्स्ट इम्प्रेशन जो था वही था कि ये बहुत ही बड़ी स्टार बनने वाली है, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। Ranbir, you and Deepika are compared to Shah Rukh and Kajol. What do you have to say about that thing? Their chemistry meter is beyond Palang Tod also, it's another level of chemistry what they share. तुम पहले से इतनी खूबसूरत थी या वक्त ने किया कोई हंसी सितम? हाँ सर। Deepika, who do you look hotter with, Ranbir or Ranveer? Is your Jawani Diwani or is your Bajirao Mastani? Right now, my Javani is fully Diwani. अच्छा। अगर रणबीर को और रणवीर सिंह को आप रेट करें इन तीनों में जो केमिस्ट्री मीटर है तो कैसे करेंगे? किसको क्या देंगे? दोनों ही पलंग तोड़ है यार। कौन से रंग का दिल है तेरा क्या चाहता है? बोलो, जवाब दो। अंदर क्या है? दीपिका अंदर है। I was just saying, अगर तुम साथ हो while you were talking about it, when we are hugging and I'm trying to go, I think in few shots I had in my mind, I really wanted to pee badly, and that really helped me to I have to go. Dude, I was crying. Okay, I was crying, and you were thinking of peeing. I had like 4 liters of water that day, so you know how it is. My favorite song from the film. So we had shot to a completely different song, and then of course I think Imtiaz sir and Rahman sir felt like they wanted to change the track, and then we ended up making Agar Tum Saath Ho eventually. I remember when we shot this song. Do you remember blocking it in the hotel room? So Imtiaz sir is someone who likes to do a lot of rehearsals. He likes to do a lot of blocking. So we were shooting. We were staying at this hotel, and so we've actually rehearsed the song. So that entire dining table, not dining table, but that whole table sequence that you see is where we had to rehearse the whole thing, and he wanted it to be a certain way. He wanted it to be that these two people trying to sort of, one is trying to detach and walk away from the situation, and the other one's trying to sort of just hold on to whatever little she can, and so we blocked it. He wanted like the actors to move a certain way, but then he also kind of let us free flow and left room for improvisation. So that's how we've shot most of the songs. But why don't you tell us what your favorite part of this song was? I think just the way Imtiaz conceived the song, we shot it like a scene. It wasn't shot like a song. And I think the song we shot it to was actually a happy song. So it was you this way and me this way, and the juxtaposition of a happy song was quite different. It was quite new, and so it was fun. But like I said, you had to really indulge in the emotion of cathartic heartbreak and just seeing you take after take, just giving it all, and Keep it playing simple, the entire bro. stage. Keep it simple. Keep it simple. Huh? No, nicely I'm complimenting you and just keep it simple. So yeah, so it was nice. The experience was very. It wasn't like a song. It was like a scene, and I think it was good fun. Such a beautiful story. इतना अच्छा म्यूजिक है, अच्छे तरीके से शूट किया है.
और इतने ब्यूटीफुल खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दिए हैं आपने और रणबीर ने. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू. आई एम वेरी प्राउड both Ranbir and Deepika for most wonderful, unprecedented, staggeringly emotional and nuanced performances. मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी. आई थिंक इट वाज अ वेरी डीप थॉट और सबसे केमिस्ट्री छोड़ के आई थिंक जो मैसेज था डायरेक्टर का, स्टोरी टेलर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो मुझे समझ में आई. वो मुझे बहुत छू गई ऐसे दिल को. सो आलिया चाहेंगी, आलिया हमेशा से कहती है कि रणबीर उनके फेवरेट एक्टर्स में जी. तो क्या आलिया चाहेंगी कि इम्तियाज अली ही रणबीर और आलिया की जोड़ी? आप उनसे बोलिए ना, हमने बहुत बार बोला है, आप उनसे बोलिए. थैंक यू सो मच.